Hey guys, welcome back to my YouTube channel. I'm here with another vlog. So guys, आज है वेडनेसडे और आज मेरी है ट्रिप स्कूल की तरफ से. सो आई एम टेकिंग माई स्मॉल बैग. स्कॉल बोल रही हूँ. कोई बुक्स वुक्स तो लेकर जानी नहीं है. इट्स एन एजुकेशनल ट्रिप, नॉट अ फन ट्रिप. सो या इसमें मैं कोशिश करूँगी कि हमें अगर मोबाइल अलाउ कर दिया तो मैं कुछ वीडियो बना लूँ, वरना तो मैं नहीं बना सकती. हाँ, जब हमारी फील्ड ट्रिप होगी, मतलब फ़न ट्रिप होगी, उस वक्त तो मैं बनाऊँगी. क्योंकि उस वक्त हमारे पास मोबाइल्स होते हैं, हम यूज़ कर सकते हैं मोबाइल्स. सो या स्टे ट्यून्ड फॉर द फील्ड ट्रिप. अभी तो हम बस जा रहे हैं स्टॉप की तरफ, बिकॉज़ यहाँ से हमें बस स्कूल लेकर जाएगी, स्कूल से फिर हमें दूसरी बस वहाँ लेकर जाएगी. हम जा रहे हैं कुरानिक पार्क से. मज़ा आएगा. आई गॉट दैट मिनी बैग जो मुझे गिफ्ट में मिला था, मेरे बर्थडे गिफ्ट्स से. अब हम आपको मिलते हैं या तो कुरानिक पार्क में या तो घर पहुँच के. हे गाइस, सो गाइस अभी हम लोग आ चुके हैं घर पे. हम लोगों को फ़ोन अलाउड थे वहाँ पे कुरानिक पार्क में, तो इसलिए मैं लेके गई थी. मैंने वहाँ पे थोड़ी बहुत वीडियोस बनाई भी हैं, काफ़ी सारी मतलब बनाई हैं. मैंने दिखाया पूरा कुरानिक पार्क से. जाके अभी इसके बाद आप लोगों को क्लिप्स देखें एंड इन्जॉय. मेरी दोस्त ने बनाई थी वो कुछ क्लिप्स, वो आई नहीं. उसकी आवाज़ ज़रूर आई होगी पीछे. अभी हम लोग मैं कर लेंगे लंच, बिकॉज मुझे बहुत भूख लग रही है और बहुत ही ज़्यादा प्यास लग रही है. ठंडा पानी के लिए क्रेविंग हो रही है मुझे. बहुत टाइम है मैंने ठंडा पानी नहीं पिया. पानी थोड़ा बहुत पिया था बट उसके बाद नहीं पिया गया मुझसे पानी. बट अब मुझे बहुत ज़्यादा पानी पीना है. मीट यू आफ्टर लंच, मीट यू एट डिनर टू बी मोर प्रिसाइज. जब तक आप बैठ के मेरी वो कुरानिक पार्क की क्लिप्स देखें. They agreed and welcomed him for the signs of goodness that they saw in him. When the ship sailed and became in the middle of a sea, the sky was darkened and the waves raged. The ship swayed and was heavy with its load and passengers, so that it almost drowned. The passengers became distressed, and they agreed to cast a vote on their names, and whoever his name came out would be thrown into the sea to relieve the ship from its load and to save its people. When the people voted, the name of Jonah came out. The passengers refused the order, and they did the lottery again. Each time Jonah's name came out, the lottery took place 3 times. They decided to throw Jonah in the sea. Jonah, peace be upon him, realized that he was mistaken to leave his people in anger without obtaining the permission of his Lord. He threw himself into the raging sea, accepting the order of Allah Almighty. At that terrible moment, God ordered a great whale on the seabed to swallow Jonah without breaking a bone or inch the bottom of the sea as ordered. Jonah, peace be upon him, thought that he was to die, but he found himself alive, unable to see, surrounded by heavy darkness. The darkness of the night, the darkness of the sea, and the darkness of the stomach of the whale. Thence his tongue repeating with a submissive heart, peace be upon him, said to him, how could your head turn white when there was no old age at your time? Sam, son of Noah, said, O soul of Allah, when you called on me, Allah gathered my joints and bones and he recreated me. And when you called me on the second time, my soul returned to me. Yet when you called on me the third time, I was scared that it could be the judgment day, so my head turned white. An angel came to me and said, this is Isa calling on you to support his statement. O soul of Allah, ask your Lord to return me to the afterlife. I have no wish to remain in this life. And he said to people, believe him, he is a prophet. Some people believed him, while others disbelieved him, saying that it was nothing but magic. Then the prophet Isa, peace be upon him, said to Sam, son of Noah, die. So Sam, son of Noah, said, on the condition that Allah spares me the pains of death. So the prophet Isa, peace be upon him, asked Allah 100 years, as the bones were worn and turned into pieces. Thence the angel told him that Allah Almighty wanted to make him an example of how
while we revive the dead. Then the other order came. Look at the bones. Uziah looked again, and he saw the bones moving and gathering, forming the shape of the donkey until it was complete. Afterward, Allah Almighty, by his power, covered the structure with flesh, and he covered the flesh with skin. Thus, the donkey returned to a complete creature, standing on its legs, with life brought back to it, and warned them of an approaching danger, armed with the spirit of courage, wisdom, and initiative. So now, the stage of the psychological preparation for the people of Israel to remain steadfast before that cruel ordeal. Allah inspired his prophet Moses and his brother Aaron to turn their houses into places of worship and to establish prayers while having confidence that victory was approaching and that they would defeat their enemy, the Pharaoh. Moses asked his Lord to destroy their fortune and to harden their hearts so that they would become ruthless, unresponsive to advice, which would earn them the worst and severest punishment. The doors of heaven opened to the prayers of Moses, peace be upon him, and his brother Aaron. God responded to the prayer of his prophet, and the permission came to Moses and his people to leave to adorn themselves in their feast. When night came and darkness set in, it was the time of salvation and departure from the land of hardship and pain. Moses and his people set out at night, rushing away from the Pharaoh and his tyranny, and from the humiliation and slavery. Yet the Pharaoh was aware of their departure, so he was angered by their escape, and he gathered his soldiers to catch up with them. He marched behind them in a great army, aiming to catch up with them. The Pharaoh pushed his soldiers until he became close to them. The two teams became close. The two groups met and marched. And the prophet, peace be upon him, called his people to witness that miracle and believe in him as they promised. Nevertheless, they insisted on their disbelief and evaded their promise. They rejected faith and accused him of witchcraft. They said, Muhammad charmed our eyes. What we have seen is clear magic. But if you have charmed us, you will not charm all the people. Let us see what the travelers say. The travelers came and declared that they had seen the splitting of the moon clear to every seeing eye, and that they were greatly scared. Yet most of the people of Quraysh remained in their disbelief and stubbornness, and said, Muhammad has charmed people. This is a permanent and continuous magic. Thus, the people... बोलो भी कुछ तुम वो देखना जरा मेरी दोस्तों की हरकतें क्या कर रही हैं दोनों दोनों कैसे पीछे से ना रही हैं। So guys, पापा जस्ट अभी अभी पहुँचे हैं और हम लोग बैठे हैं खाना खाने के लिए। आज पापा लेकर आए हैं फ्राइड चिकन, यमी, थैंक यू सो मच। ये चिकन है, ये इसके साथ फ्राइज़ हैं और ये डिप है, माय डिप, थैंक यू सो मच। ये मेरी डिप, ये पापा की डिप और मैं साथ साथ केचप ले आई हूँ। हम खाते हैं खाना, एंजॉय। हम आपको मिलते हैं व्लॉग एंड करते वक्त। तो गाइस हम लोगों ने खाना वाना खा लिया है। खाने के बाद हमारी खजूरें चलती हैं। यस, ये डेट्स हैं जो ऐसे खाते हैं। वो घुल रही है मुंह में, बोला नहीं जा रहा है। मजे की होती है। हाँ, ये वाली मजे की होती हैं। अरे मम्मा, अच्छा तो गाइज अब हम करने लगे हैं ब्लॉग का एंड। तो पहले पापा बोल रहे, फिर से बाद में बोलोगे। पापा पहले खा ले। पापा पहले खजूर खा ले। मैं खाने में तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और कमेंट करिए। लाइक नहीं करते यार लोग, लाइक क्यों नहीं करते? देखते हैं, लाइक कर दें। आपका क्या जा रहा है?
एक खाली बस एक बटन दबाना है, टिन, बस वो लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। हमें कितना माइलस्टोन अचीव करना है? 1000 का 1000 का फिलहाल माइलस्टोन अचीव करना है। 1 मिलियन के बाद में देखेंगे। एकदम फिलहाल 1000 बहुत है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप हमारे चैनल को शेयर करिए। ओके सो गाइज हमें अब आप लोग सपोर्ट करें ताकि हम लोग 1000 की फैमिली बनाएं। सो या गाइज दैट्स इट फॉर टुडे। होप यू लाइक द व्लॉग। आपको मेरा छोटा सा वो पार्क का भी ट्रिप अच्छा लगा होगा, मज़ा आया होगा देखने के लिए। सो गाइज डू लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड शेयर। आई लव यू ऑल। बाय।